हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियोस में हमने देखा कि किस तरीके से वेरियस टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं जो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं क्लास के अंदर। इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ मेथड्स के बारे में बात करेंगे। आपने देखा होगा प्रीवियस वीडियो में मैंने कहीं पर क्लास मेथड्स वर्ड यूज करा था, कहीं पर इंस्टेंस मेथड यूज करा था और कहीं पर मैंने स्टैटिक मेथड यूज करा था, है ना? सो लेट वी डिस्कस अबाउट ऑल दीज मेथड्स इन डिटेल। So there are following types of methods. One is instance method. Second one is class method, and third one is static method. So let me start with the instance method. What do you mean by the instance method? If inside a method implementation, if inside a method implementation we are using a self argument, then these methods are instance method. एक इम्पॉर्टेंट बात है, जब भी हम इंस्टेंस मेथड को डिक्लेयर करते हैं, वी हैव टू यूज आर्गुमेंट सेल्फ और एनी डिफाइंड वेरिएबल। If we want to access these inside the class, we will use self variable to access this, and outside the class object reference. This type of methods are basically called as इंस्टेंस मेथड। तो आपने देखा होगा कि हमने एक क्लास स्टूडेंट बनाई हुई थी, है ना? हम फिर देखते हैं उसको कि हम एक क्लास स्टूडेंट बनाते हैं और इस क्लास में हमने पहली जो मेथड डिफाइन करी है, सपोज वो है अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। मैंने आप लोग पढ़ा है, ये एक स्पेशल मैजिक मेथड है जो कि कंस्ट्रक्टर को बनाने का काम करती है क्लास में, है ना? लेकिन इसका फर्स्ट आर्गुमेंट यदि आप देखेंगे, सो दिस इज सेल्फ। सो व्हाट आई शुड से, this is using the self as a first argument. It means the constructor itself is a instance method. So I can have suppose I am taking one input like marks ही ले लेता हूँ मैं simplicity के लिए. So self dot marks is equal to marks. हमने self का यूज करा, वहां पर हमने instance variables का यूज करा. Similarly, if I am defining one method that is student underscore address, और मैं वहाँ पर उसको सेल्फ पास करके साथ में एड्रेस पास कर रहा हूँ, सो व्हाट आई विल डू, आई एम जस्ट टेकिंग द स्टूडेंट एड्रेस हियर एज डॉट एड्रेस इज इक्वल टू एड्रेस जो भी पास हुआ है, और सपोज आई एम रिटर्निंग दिस, है ना? गेटर सेटर मेथड का कॉन्सेप्ट है ये कि मैं एस डॉट एड्रेस जो है रिटर्न कर रहा हूँ। फाइनली आई एम जस्ट प्रिंटिंग स्टूडेंट डेटा, स्टूडेंट अंडरस्कोर डेटा, इसमें भी मैं सेल्फ पास कर रहा हूँ, एंड what I'm doing, printing the student name as name here. This as name you can see we are having self dot name, self dot name. Now I'm printing
dot s marks, that is nothing, it's a self dot marks। मैंने इसमें से नेम हटा दिया था पहले हमारे पैरामीटर में से, तो मैं इसको नेम नहीं लेता हूँ फिर से, है ना। सेल्फ डॉट मार्क्स और फाइनली आई वांट टू प्रिंट एस डॉट एड्रेस, आई विल राइट एस एड्रेस। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, मैंने आपसे बोला था कि सारी इंस्टेंस मेथड जो होती हैं इट इज डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास, और सेल्फ यदि इनका आर्गुमेंट है फर्स्ट, तो वो कहीं ना कहीं इंस्टेंस मेथड है हमारी, और सेल्फ के थ्रू यदि हम वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हैं उसके, तो वो भी सारे हमारे इंस्टेंस मेथड्स हैं। मैंने आपको यही बताया कि इंस्टेंस मेथड को हम इनसाइड द क्लास यदि एक्सेस करना चाहते हैं, तो मुझे सेल्फ के थ्रू ही करना पड़ेगा, और यदि मैं एड्रेस प्रिंट कर रहा हूँ तो व्हाट आई नीड टू डू, आई हैव टू प्रिंट द एस अंडरस्कोर एड्रेस। और इस एड्रेस में मैं क्या पास कर रहा हूँ, सपोज आई एम पासिंग भोपाल। मैंने रन दिस कोड, यू आर नॉट हैविंग एनी एरर, और मैं यदि एक स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ यहाँ पर, और इसके अंदर पास करता हूँ मार्क्स जो है 100 है, एंड व्हेन आई प्रिंट एस डॉट स्टूडेंट अंडरस्कोर डेटा, द आउटपुट student is not defined, so stud, it should be nt not tn. So when I run this code again and again, can you see the x marks are 100 and s address is the Bhopal. So this method is called, instance method is called inside the class by using the self variable itself. और सिमिलरली इस इंस्टेंस मेथड को यदि मुझे बाहर कॉल करना था, तो ये भी इंस्टेंस मेथड थी, इसको बाहर कॉल करने के लिए हमने किसका यूज करा है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस का यूज करा है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द इंस्टेंस मेथड। नाउ लेट वी डिस्कस अबाउट द क्लास मेथड्स। देखिए क्लास मेथड्स क्या होती हैं, है ना। Methods are basically important whenever my code inside the method is only dealing with the static variable, है ना। So in method implementation, if only static variable is there, then use at the rate class method decorator. It must contain the CLS variable, like self in the instance variable, it must contain the CLS variable. So how to access this class method? By using class name or object reference. Call this method, we have to use the class name or object reference. So inside the class में किस तरीके से करूंगा, ऑब्जेक्ट रेफरेंस के थ्रू ही करूंगा। सपोज हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, एंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम समटाइम आस्क्ड इन द इंटरव्यूज, we need to create a program to track the number of objects created for a class। मतलब किसी भी क्लास के लिए कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए हैं, यदि मुझे इसकी डिटेल रखना है अपने पास, तो उसका प्रोग्राम क्या होगा, है ना। सो व्हाट वी विल डू हियर, सिंपली वी आर हैविंग वन क्लास ऑब्जेक्ट काउंट। इनसाइड दिस क्लास मैं एक काउंट वेरिएबल लेता हूं, जो कि क्या है, आपका स्टैटिक वेरिएबल है ना। अब मुझे यदि ऑब्जेक्ट काउंट करना है, तो जितनी बार मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, यदि उस कंस्ट्रक्टर पर मैं काउंट की वैल्यूज को बढ़ाता जाता हूं, तो आई विल बी एबल टू काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैं एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर रहा हूं, सी वेरी केयरफुली, दैट इज अंडरस्कोर इनिट। इनसाइड दिस सेल्फ I'm doing, under this constructor, I am accessing the object count dot count. It should be count, not count, plus equal to 1। तो जब भी एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा, मेरा ऑब्जेक्ट काउंट का जो काउंट स्टैटिक वेरिएबल है, वो हमेशा इंक्रीमेंट होता जाएगा। अब एक बात देखिए,
मैं इसके लिए एक मेथड कॉल करता हूँ कि डिस्प्ले, है ना, दैट विल प्रिंट द आउटपुट. So it is better to have a static method. Number of objects are here. What I will do simply, I have to print the cls dot count, क्योंकि count मेरा static variable है और उसको मैं cls से access कर सकता हूँ. तो जब मेरे method में कोई भी मैंने instance variable का use नहीं करा है, so what I will do simply, I will write the class method. When I run this code, here is the invalid syntax. Why? Okay, it should be comma here. Now run this code, and suppose I'm creating O1 is equal to object count in bracket. Then I do O2 and object count bracket, and when I print O2 dot display, can you see name object count, count should be there. Fine. So when I run this code, can you see the number of objects are 2? So in this method, in a whole program, it's a simple program, but it is only utilizing the static variable rather than having the instance variable also. तो हम यहाँ पर क्लास मेथड का यूज कर सकते हैं क्योंकि हम केवल स्टैटिक वेरिएबल्स के साथ डील कर रहे हैं. सो दैट इज व्हाट द ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग अ क्लास मेथड. द थर्ड टाइप ऑफ मेथड इज द स्टैटिक मेथड. So static methods, basically these are general utility methods. जनरल यूटिलिटी मेथड्स का मतलब क्या है? मान लीजिए मेरे को बोलना है कि इसको एक कैलकुलेटर बनाइए, उसमें ऐड करिए, डिवाइड करिए, सब्सट्रैक्ट करिए. सो दीज आर द basically methods which is taking the local data and calculating the values to you and returning to you. So basically it's used as a utility. Inside these methods, don't use sense variable. But one important thing is here, we normally also not use class variable, क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं है, बट समहाउ वी विल बी एबल टू यूज इट. रिकमेंडेड नहीं है कि हम इसके अंदर ना यूज करें, है ना. सो वी डोंट यूज द इंस्टेंस वेरिएबल एंड एज वेल एज द क्लास वेरिएबल, है ना. एंड वी डू नॉट प्रोवाइड any kind of variable. We do not provide any kind of variable like self and cls. Create this method in a Python. We will be using the @static method decorator. The last point come about the access of this. So how to access the static method? By using class name or object reference. Let me see one code here. Suppose I am defining one class here. Suppose it's Rahul Kelsey, and inside this class I am having two variables like define, add. We are having add method here, and we are calling x comma y, and simply print the sum is colon x plus y. You see in this method we are not having a special variable here, and I am declaring this the static method.
So can you see the use of this method is we simply we are calculating the x plus y sum. Similarly, we can extend this code for this calculator purpose. Like we can have at the rate static method here, and we can have multiple x comma y. Then what I need to do, the multiple is x into y. See here, at lot of places we have used static method, and simply when I create the calc object, calc in bracket, and when I run this code calc dot add, and we pass 5 comma 10. When you run this code, can you see the output is sum, that is 15. Similarly, you was able to use the Rahul calc method, Rahul's calc class here, to access the static method add, and finally you need to pass 10 comma 5, and you will be having the output as a sum. So that is what the way by which we can utilize the static method for the general purpose utility, and you can access it by using class name, or either you can use your object reference variable. So these are this is all about the types of methods, जिसमें हमने instance method भी देखी, static method भी देखा और class method को भी देखा. So for this video, it's all from my side. Thank you.